I'll tell you one more thing. Like अब यहाँ तक yoga meditation की बात है, the thing that pisses me off, and I don't know, maybe हो सकता है मेरी personal gripe हो ये, but when I तुम्हारा you go to these retreats, yeah, you see these, तुम्हारा meditation and ये सब, and you realize like, okay, somehow this also has been hijacked by the corporate West, तुम्हारा machine, जहाँ पे अब meditation and yoga is a very misunderstood concept, and it's a concept जो कि तुम्हारा यार audio mute है. I just want to tell you. Oh, sorry. Thank you. No, it's fine. Yeah. So it's a misunderstood concept because now they have made it like, for example, very good example is goat yoga or beer yoga. What is beer yoga and goat? Goat yoga, one of the most popular form of yoga, जिसमें कि goats के साथ तुम yoga करते हो and they climb on you and they jump on you and stuff like that. The point is you've removed the philosophy and the उसकी आत्मा जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज की, right? उस चीज को निकाल दिया. Meditation is उसको एक माइंडफुलनेस बना के हम एक कोर्स में बेच रहे हैं. वेस्ट पता है हर चीज का ये करता है. एक कैपिटलिस्टिक मॉडल में, आई वुड नॉट से जस्ट वेस्ट लाइक ब्लाइंडली, प्रोडोमिनेंटली अमेरिका से स्टार्ट होता है. यहाँ पे कि तुम्हारे कुछ सेल्फ हेल्प वाले क्या करेंगे, इस चीज को उठाएंगे, इसको रैप करेंगे एक बहुत ही गजब सेल्फ हेल्प तुम्हारे ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल में, जिसको वो कोर्स से या इसके थ्रू स्पिरिचुअलिटी को हम मार्केट कर पाए और बेच पाए. उन्हें पता है बहुत तगड़ी और एक विमेन, वाइट विमेन की एक पॉपुलेशन है, बिकॉज दे टारगेट वाइट विमेन. तुम्हारे मेडिटेशन एंड योगा से टारगेटिंग मेन की पॉपुलेशन हु लाइक दिस, तुम्हारा माइंडफुलनेस एंड बॉडी एंड चक्रास एंड एवरीथिंग. सो आप देखोगे एक बहुत खतरनाक लेवल का मिसरिप्रेजेंटेशन और एक हाईजैकिंग चलती है, जो चीज को आई थिंक कभी कभी चीजों को सेंसिटिविटी और केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए, जो कि वो डिमांड करते हैं, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है. उसको हमने एक ओवर सिंप्लीफाई करके उसको एक कैपिटलिस्ट टूल में बना के हम उसको बेच रहे हैं, एंड आई थिंक वी अलाउ दैट. मेरे को ये चीज मेरी हमेशा रहती है कि आई वुड मच रादर हैव कि यहाँ पे जितने भी रिट्रीट्स हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ ना तुम्हारे यहाँ पे आप जाओ 400 यूरो, 500 यूरो योगा, एंड इट्स ऑल हैंडल्ड बाय वाइट पीपल. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक डू यू इवन नो, तुमने उसको एक वो बना दिया कि आप आओगे डिटॉक्सिफाई, जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, दिस नॉनसेंस बुलशिट थिंग्स, लाइक आप 5 दिन के लिए आ रहे हो एंड दिस इज अ योगा थिंग, एंड उसमें वो उठा के बुद्धा का भी एक वो डाल दिया, रॉक्स डाल दिए, एक इंसान शामन की तरह, प्रॉब्ली वो वीड स्मोक कर रहे हैं वहां पे, राइट? दैट हिप्पी थिंग दे मेड इट इनटू. And that's what I realized कि maybe these things में हमारी थोड़ी पकड़ ज्यादा होनी चाहिए कि maybe don't handle shit that you don't understand. I don't know. Unfortunately, any good notion, any good idea has, as you said, commercialized करके, there's always a danger of it being corrupted. Unfortunately. Now, अभी आप कोई भी चीज देखो, right? I mean, even something like democracy. Yeah. Such a powerful idea. अभी आप देखो, मतलब जब भी मैं democracy का सोचता हूँ, हजारों सालों के लिए our people have been, I mean our as in world, the people of this world have been run by kings, have been run by people where you have no right about yourself. पूरा life वो चलाते थे. Democracy का idea आ गया कि you decide who can rule you. But if you see the way democracy anywhere in the world, in the UK, US, everywhere, इतना divisive हो गया है democracy कि अभी democracy, there was a guy called Alexis de Tocqueville who was a US philosopher, American philosopher. He called it the tyranny of the majority, in terms of, so it's not that the majority is also right. So what it essentially means. So any good notion, I think democracy is such a powerful notion, but even democracy doesn't work perfectly. So when democracy doesn't work, which I think democracy should be in our blood, I mean it is in our Indians' blood, but ग्लोबल लोगों के मतलब nobody should ever question democracy की is democracy good or not. और democracy जब ठीक से नहीं चलता उसको हम करप्ट कर देते हैं. तो योगा मेडिटेशन क्या चीज है बॉस? अंत में तो सबको पैसा बनाना है. So while I don't subscribe to it, I mean अभी मैं तो रोज मेडिटेट करता हूँ 2 बार, मैं योगा तो हफ्ते में 3-4 बार फील करता हूँ. But I am a bit of a traditionalist in that sense. But my point is, you are right, it's being corrupted. It is being, people are going down this path and trying to make use of it. But I hope that is a part of their journey. I mean, I would hope that they start off there, they realize the folly of what is happening, and then they come back to what the right path is. क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी सीखने के लिए थोड़ा टेढ़ा जाना पड़ता है. I agree. ये लोग थोड़ा टेढ़ा जाएंगे और फिर वापस hopefully वापस घर पे आएंगे. You know what I mean? No, I'm not talking about Indians. I'm talking about our soft power के point of view से, when it's marketed to तुम्हारा the West, and by West I mean America, and even now very तुम्हारा popularity के point of view से in European, like तुम्हारा Middle Europe as well. But what you're saying is interesting, because I had a friend of mine who went to grad school with me. He was from Slovakia, actually, Czech Republic actually. And he once said to me कि अरे योगा, तुम योगा करो? बोला
I said, yeah, yoga is big in India. It's from India. Like, yoga is from India. Like, yeah, isn't it from California? Can you imagine? Same, bro. Can you Same experience हुआ मेरे साथ. imagine? Can you I was imagine barber yoga? shop में था. He said the same thing. He's like, yoga is from India. It's like, what? I'm like, wow, yaar. They said, isn't yoga from California? I said, no, yoga is not from California. So can you imagine? But you are right. We are losing out on that, right? That's my point, na. Our biggest export, boss. If you ask me, Hindustan, India का सबसे बड़ा export क्या है? ये soft power है. अभी आप रशिया में जाओ, जरा लोग आज भी राज कपूर के गाने गाते हैं. अब दुनिया में किधर भी जाओ, लोग योगा करते हैं. You know the power we have, and unfortunately, instead of controlling the narrative, as you said. Yes. They're letting it get diluted into this beer yoga, goat yoga. Goat yoga and pointless. It's not even this. इसको एक बहुत ही hippie style में हम ले लेंगे. That somehow it's all about like letting yourself go and let's just have sex and just be hippie and fuck the world. You know, वो तुम्हारा 60s का hippie बन जाता है meditation. I've seen this shit. No, you're right. मैं documentaries देखता हूँ, मैं ये सब देखता हूँ, उसमें दिखता है कि okay, so they took concepts of तुम्हारा some certain concepts of meditation and they तुम्हारा वेस्ट लाइक वो अपनी कहते हैं ना, एक कोट है ना बर्ट्रांड रसल का, स्टूपिड मैन्स ट्रांसलेशन और स्टूपिड मैन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट अ क्लेवर मैन सेज विल ऑलवेज बी रॉन्ग बिकॉज़ ही विल अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन व्हाट ही अंडरस्टैंड्स, राइट, ऑफ द थिंग. सो वही उनका इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने उठा के अपने टेम्पलेट में पुट किया, उठा के उन्होंने कुछ और ही बना दिया उसका. देखो ना 70s maybe when Beatles came to India, etc. India was a place where you do acid and then gain revelation. What nonsense. You know what I mean? I mean, firstly, that's the sort of image that they built, right? Like it's a country of snake charmers and elephants where you even Apple ki story, right? He came to India as Steve Jobs, right? Yeah, same. I mean, same thing with Steve Jobs, right? I mean, Steve Jobs came to India. He met and I actually had the pleasure of meeting one of the guy who Steve Jobs came to India with, and actually Steve Jobs worked on his uncle's farm, and that's on his uncle's apple farm. And apparently, that's how he got the name Apple. Yeah, Apple. That's what the story he told me when he knew. But my point is that I think ultimately what is very important is controlling the narrative.